recording. So I've started the recording for this class as well. Okay, so I'll send you yesterday's recording. Thank you, sir. You're welcome. Acha. एक minute. पहुंच गए. Meyer is here. Hello, Meyer. How are you? Zara is here. Zara, आज वो नहीं नजर आ रही अपना. I forgot the name. Oh, ये recording पे चला. Oh. Hello guys, hello. Can you guys hear me? Yes, sir. मेरी बिजली चली गई, फिर आ गई है. Just 1 minute में मैं I'll reconnect with the Wi-Fi. ठीक है, just give me a minute. अच्छा जी, कौन वापस आ गया? Okay, Ibrahim is here. Ramisha, hello. Hi Ramisha, how are you? Zara is here. Muhammad Aziz. All right, ठीक है. Okay. So I was saying कि the other day, रमीशा, हमने डिसाइड किया था कि हम थोड़े से पास पेपर्स प्रैक्टिस करेंगे. ऐसा ही है ना ज़ारा? जी सर. I think it works for everybody. अभी भी जिस बंदे को रिव्यू चाहिए of a particular topic should let me know. Okay guys? By the way, the mic's off. To turn it back on, slide the switch on the back of this device. Okay. ठीक है. Right. So we'll start with this. अच्छा, किसी को कोई रिव्यू वगैरह चाहिए, we can have a separate session for that. ठीक है. Within this class, क्योंकि बहुत सारे students differently abled है, हर एक की अपनी strengths weaknesses हैं, majority लोग comfortable हैं, इसलिए मैं past papers पे आ रहा हूँ direct. ठीक है. जो बंदा बहुत ही वीक है और बहुत अनकंफर्टेबल है इसके साथ, we can have separate sessions. तो उसके अंदर मैं तुम लोग को ease out करके फिर बाकी सबके साथ चला दूंगा. Let's start with this question. This is one of the past paper questions not long ago. कहता है, read the question. Read the question, please. Oh yes, Isha is here. Hello Isha, how are you? Assalamualaikum sir, I'm fine. How are you? बेहतरीन ईशा, थोड़ी सी लेट तुमने ज्वाइन किया है, लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया, बिजली चली गई थी मेरी बीच में. ऑलराइट, सो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं पास्ट पेपर्स की. ओके, दायान, इब्राहिम का मुझे पता है स्टेटस, ईशा का पता है, मायर का पता है, रमीशा का पता है, ज़ारा का पता है. दायान, आई डोंट नो वेयर यू स्टैंड विद दिस टॉपिक. Sir, I was hoping we could start from the beginning. ठीक है. You were talking All about right. one of those sessions. I could attend one of those. ठीक है, I'll have a Sir? separate session with you. जी. Or you could send me the lecture. Sir, I'll can we catch up do in it no like time. topic wise? जी रमीशा, पास्ट we पेपर हम do- टॉपिक
क्वाड्रेटिक का पास, क्वाड्रेटिक का रमीशा पास पेपर कर रहे हैं। Okay, okay. हाँ, रैंडम पास पेपर्स नहीं कर रहे, पहले टॉपिक का क्वाड्रेटिक्स का। ठीक है दयान, I'll be explaining this, बाकी लोग भी कर रहे हैं। Guys, everybody try this. मोहम्मद अजीज, कैन आप मुझे अपना स्टेटस बताओ प्लीज। Sir, what do you mean by status? You mean like how confident I am in the subject, or? हाँ, मतलब इस टॉपिक का, सब्जेक्ट नहीं, टॉपिक। Sir, I think so. I'm fairly understood with the topic. ठीक है, अच्छा तुम्हारी डिफिकल्टी कहाँ से शुरू होती है? Sir, mostly binomial and trigonometry. ठीक है, बाइनोमियल और ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, हाउ अबाउट दैट, वो भी करना है, किया हुआ है स्कूल में क्या? उसमें क्या? Differentiation अभी हम लोगों ने खत्म किया, integration शुरू किया. It doesn't seem that hard, but definitely something I would like to work on. ठीक हो गया। मोहम्मद अजीज, आप किस स्कूल से हो? Sir, PCP, Beacon House. ठीक है, ये बीसीपी कौन सा वाला है? Magra campus, sir. बीएमआई है ना यार, और वो अगला? सर नाम बदल दिया तो पता नहीं क्या कहना अब. अच्छा ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है मोहम्मद, I'll work with you and Dayan separately. Ramisha, you can join that class, separate class, ठीक है? अभी हम ये करेंगे। इब्राहिम, can I hear your voice? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। चलो जी, काम शुरू करें। अभी मैं स्विच कर रहा हूँ नेटवर्क, मैं शायद ग्लिच हो, इधर उधर हूँ, फिर वापस आ जाऊंगा। स्विचिंग हैपनिंग नाउ। All right, I think that was smooth. Okay, the equation of a line is y equals mx plus c, where m and c are constants, and the equation of the curve is x y equals 16. Given that the line is a tangent to the curve, express m in terms of c. This line is a tangent to the curve. Now, if you have a curve and there's a line which is tangent to it, means that this line and the curve meet at one point of intersection. Those of you who have studied differentiation might mix this with differentiation. Guys, always have a lookout for the number of marks allotted. So these aren't many marks. So fair chances कि इसमें differentiation की जरूरत नहीं पड़ेगी, because that, if you do take that path, it will be longer. Is that fine, Mohammed Aziz? I should emphasize that for you, maybe. Yes, sir, it's fine. So ठीक हो गया. So what we do here, Dayan, is Dayan, tangent का मतलब है कि लाइन और कर्व एक जगह मिल रहा है. You are aware of tangents कैसे behave करते हैं? Yes, sir. ठीक है. Tangent का मतलब दयान होता है one point of intersection. Whenever you think of intersection, you should think that I can simultaneously solve the equations to get my answer. Intersection का मतलब ये है, it should trigger a thought that I need to solve these simultaneously. You got that? And how do you Yes, go sir. about solving this simultaneously? By substitution. Substitution. देखो O levels में तो तुम elimination भी करते थे, ठीक है? AS के अंदर usually simultaneous का मतलब है कि बस तुमने substitution करनी है. Okay? This is like a fixed Okay, thing. sir. It doesn't change. अच्छा, अब substitution क्या करनी है? इसका मतलब क्या होता है कि जब चीजें intersect होती हैं, that means their y and x values are equal. Generally, y values are equal.
तो इस mx plus c के एक्सप्रेशन को if I plug it here, इस y की जगह, I hope that is not confusing. Sir. तो ये सारी थॉट थी राइट पे जो मैंने लिखी है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है सोल्यूशन के साथ. सोल्यूशन में पहला स्टेप ये है, you've plugged in place of y mx plus c. Isha and Ramisha and Zara, are you guys all right with this? Yes, sir, I am. बेहतरीन हो गया, बेहतरीन, गुड जॉब. इसको x को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, mx स्क्वायर हो गया, cx हो गया, 16 को एक तरफ ले आए, इक्वल टू 0 हो गया. डन. नाउ अब थोड़ा सा दयान, इसके अंदर थोड़ी सी चीजें तुम सीखोगे ऑन द गो, ये तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दैट्स माय कमेंट ऑन दिस. बाकी लोगों को पता है व्हाट टू डू नेक्स्ट. आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू गेट to the same standard as everybody else's. Quadratic equation बन गई है. अब ये जो दूसरे लोग बैठे हैं, कल इनको मैंने एक बात बताई थी. When you know the number of roots or the number of solutions and one of the coefficients is unknown, a, b, c, ये जो होता है ना, the standard quadratic equation is ax squared plus bx plus c. Diane, you know this, right? Yes, sir. And you do know that b squared minus 4ac happens to be something called the discriminant. Are you aware of this? Yes, sir. This is part of the quadratic formula. This b squared minus 4ac carries three values. Either it is positive or negative or zero. It's either one of these. If it's positive, it means two roots. If it's negative, it means no roots. If it's zero, it means one root. One root is the same as saying there is a tangent. A tangent exists. So what you're looking at here is b squared minus 4ac is equal to 0. You got this? Yes, sir. अच्छा, थोड़ा सा देखो कैम्ब्रिज किस तरह तंग करता है. I would literally call them कि वो जरा थोड़े mischievous हो जाते हैं, if not outright evil, कि b का नाम उन्होंने c दे दिया. ठीक है, कोई भी बच्चा वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में ना थोड़ा सा भी हल्का फुल्का भी कंफ्यूज्ड है ना, तो वो बस उसके लिए इतना ही काफी है कि बी सी बन जाए, बस वो वहीं पे लुढ़क जाता है बेचारा. तो बी का नाम इन्होंने सी दे दिया है क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट सी है, तो दैट्स द बी वैल्यू. तो बी की जगह आपने सी प्लग इन कर दिया, बी स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू होगी m, c की वैल्यू होगी -16. यू इक्वेट दैट टू 0. दैट is what they had wanted. अब ये obviously m in terms of c का मतलब ये था कि m को subject बनाना है. c square plus 16 times 4 and you get 64m is equal to 0. 64m is equal to negative c square. m is equal to negative c square over 64. Everybody's fine with this? 3 marks. Yes, sir. हरे का यही आया. ओके, ज़ारा आपका यही आया. ईशा? Yes, sir. Yes, sir, I got Okay. the same answer. शाबाश. मायर, आप बताओ मुझे जरा स्टेटस बताओ, आ गया ये कि नहीं आया आपका? जी सर, ये समझ आ गया. समझ भी आ गया. बैठ के तुम लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? जी सर, नोट्स बना रहा हूँ, साथ साथ लिख रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ. और खुद भी करना है, मतलब मेरे पे नहीं रहना, खुद भी करना है. ठीक है? जी सर. ऑलराइट ओके सर. गाइस. ठीक है guys, you have to be proactive. Okay, it's not watching, it is you got to be there. We are a team, we do things together. Given instead that m is -4,
find the set of values of C for which the line intersects the curve at two distinct points for 3 marks. Dayan and everybody else. I think Zara and Isha thoda sa na isme fool nahi hongi. Zara and Isha, which part of the question would you use? Would you use the answer that you already have to solve this? No, sir. अच्छा, अगर मैं तुम्हें Sir, you would कहूं, use the equation above. हाँ, कौन सी वाली Sir, above before वाली? the b square minus 4ac, the equation you got क्या before that. ये वाली, ठीक है. Nice. ये वाली equation, Dayan, do you get this? कि आपको extra work करने की जरूरत नहीं है. You can use this equation. mx square plus cx minus 16 equals 0. m की जगह -4 डाल दो. ठीक है? So -4x square plus cx minus 16 is equal to 0. All right, guys. So what about it now? What does it say? It says it intersects the curve at two. b square minus Yeah. B square minus Very, 4ac. very nice. Distinct. Distinct means different, so it has to be greater than 0, not greater than equal to. Equal to leaves the possibility of it being equal to 0, तो उसमें real roots होगा. So that means that 2 or 1 point. So b square minus 4ac is greater than 0. बाकी लोग करें. Dayan, are you following? Yes, sir. ठीक है. और इसको खुद भी कर रहे हो आप? Yes, sir. All right, good. मोहम्मद अजीज, जी सर. आपका क्या चल रहा है? सब सही है? Yes, sir. All right, good job. बस अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे ना बड़ा इम्पोर्टेंट, मैं थोड़ा सा पॉज लेके एक चीज क्लैरिफाई तुम लोगों से कराऊंगा, क्योंकि यूजुअली आई एम नॉट सेइंग यू गाइस विल मेक द सेम मिस्टेक. Usually people mess this up. Usually. अच्छा, रमीशा, इसके बाद मैं कैसे सॉल्व करूं? इब्राहिम, हाउ डू? जी, 6 minus 16 को दूसरी साइड पे. ठीक है. -16 को मैं दूसरी साइड पे, अब मैं ये रमीशा तुम्हारे कहने एक डब्बे में मैं इसको लिख देता हूं. मैं इसको आंसर में नहीं डाल रहा हूं, ये तुम्हारी कहानी है. ठीक है? -16 को दूसरी साइड पे क्या लगाऊं? इनइक्वालिटी लगाऊं? यू जी लिखूं? सर, ग्रेटर देन. जी, अच्छा, फिर अब क्या करूं? दोनों साइड पे स्क्वायर रूट. हाँ, ओके. फिर मैं क्या लिखूं? +16 and -16. Oh, 4, yes. 16, ठीक है. +16 -16. फिर ये आंसर है मेरा? 16. हाँ, ये आंसर है मेरा. सर, इनइक्वालिटी में लिखेंगे आंसर. अच्छा, इनइक्वालिटी में लिखूंगा. क्यों लिखूंगा? ये लिखूंगा और ये लिखूंगा. No, फिर C is greater than 16 and smaller than -16. ये तुम कैसे बोल सकती हो? ये किस लॉजिक के तहत तुमने निकाला पता नहीं सर. है? तुक्का? जी सर, जैसे इनइक्वालिटी में लिखना है, आई थिंक वैसे लिखेंगे. आई थिंक वो तो sir, वो तो हाँ. sir, the sign will shift with the minus answer. ईशा, The मुझे एक बात
ठीक है ईशा, मुझे एक बात बताओ, कल मैंने तुम लोगों को एक बताया था कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को किस तरह सॉल्व करना चाहिए। It represents the y values. या लाइक दैट। ओके लेट्स चेक। मोहम्मद अजीज, आप कैसे सॉल्व करते हो इनइक्वालिटी को, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हो? मोहम्मद अजीज, सर हम क्या करेंगे कि 16 greater than c smaller than -16. okay, you have visualized the graph in your head? Somewhat, not really. How do you know you're right? Don't. अरे तुक्के में चल रहे हो तुम Sir? सारे। हाँ जी रमीशा। सही, हम पहले देखेंगे ग्राफ मिनिमम कर्व का बनेगा मैक्सिमम का, फिर उससे पता चलेगा। बड़ी मेहरबानी, ठीक हो गया। इब्राहिम, हाउ वुड यू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी? जल्दी जल्दी बता दो। जारा, आपने क्या किया? सर मैंने वो पहले ग्राफ लाइक बनाया है सैड फेस का, एंड देन बिकॉज इट्स लाइक ग्रेटर देन 0 सो आई शेडेड द ऊपर वाला पार्ट, एंड देन उसके हिसाब से आई रोट द इनइक्वालिटीज व्हिच इज गोना बी Okay. c is greater than -16 and c is less than 16. ऑलराइट जारा, सैड या स्माइली? सर सैड फेस बनाया है। सी स्क्वायर के साथ नंबर क्या है? सर -4। अच्छा नहीं, इस पे बेस करके बनाना होता है। आई थॉट इस लाइक पे वी बेस हैव -4 ना, x square. ये बहुत अच्छा हो गया जारा, ये जिंदगी में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट ये बात हो गई। अब हम इस चीज की स्केच बनाते हैं, जिस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं उसका स्केच बनाते हैं। तो रमीशा, ये जो अब आपने मुझे मेथड दिखाया था ना ये डब्बे के अंदर, ये बिल्कुल नहीं करना आपने। यू गॉट दिस नाउ? ये बिल्कुल अ टोटल सीरियस नो नो है ये, ठीक है। इंस्टेड आप ये कर सकती हो दैट यू कैन गो अहेड एंड फाइंड आउट द रूट्स। The roots for this are 16 and -16, plus and minus both, that you can give. मोहम्मद अजीज प्लीज आप ये सीखें, और अब आपने हमेशा ऐसे ही करना है ताकि कोई भी रूम फॉर मिस्टेक ना हो। ये दोनों पॉइंट्स आपने प्लॉट कर दिए, ठीक हो गया। इस इनइक्वालिटी के पॉइंट्स आप लोगों ने प्लॉट कर दिए। गुड विद दिस ऑल ऑफ अस? ऑलराइट ज़ारा, ये चेक करते हैं। फिर हमने दायान ये स्केच बनाया है, क्वाड्रेटिक कर्व का ये स्केच होता है, या ये स्केच होता है या ये स्केच होता है क्वाड्रेटिक कर्व का। दायान, यू न्यू दिस? Yes, sir. एंड इट इज ऑल बेस्ड ऑन के एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। इफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये स्माइली फेस है, मिनिमम कर्व जिसको बोलते हैं, और अगर ये नेगेटिव है तो ये सैड फेस है, मैक्सिमम कर्व जिसको बोलते हैं। ये आपका कर्व बन चुका है। क्योंकि एग्जामिनर को आपने प्रूफ देना है। यस दैट इज करेक्ट सारा, बिल्कुल सही। एग्जामिनर को आप लोगों ने प्रूफ देना है, तो ये स्केच वो प्रूफ दे रहा है। ये सी स्क्वायर -16 स्क्वायर खुद रिप्रेजेंट कर रहा है वाई वैल्यूज को। सो द सी स्क्वायर -16 square is basically values for y, and it just means when is y greater than 0. Y is greater than 0 above the x-axis when the graph is positive. It's to the region to the left of -16 and to the region right of -16. So guys, on a number line, this region, all right, sorry, this region on a number line is a disconnected region.
So we are going to write this separately. We'll write it as P is less than -16 because the Y values are greater than 0, or C is greater than 16. अच्छा, ये मैंने इतनी लंबी कहानी बताई, तुम्हें एग्जामिनर को प्रूफ देना है, तुमने ये एग्जामिनर को दिखाना है and stuff. अच्छा, guys, you can also use your calculators to solve a quadratic inequality. So check this out. Press the menu button. Those of you who've got this calculator, press the menu button, find your calculators. Menu button press करो और उसके अंदर जाओ, देखो inequality जहां पे लिखा। Dayan, can you see that? है तुम्हारे पास ये वाला कैलकुलेटर? Yes, sir. Inequality मिला है तुम्हें? Yes, sir. उसको क्लिक करो, degree 2 चूज करो. Degree means highest power. Power is of the variable. It's a quadratic inequality, तो degree 2 चूज करो. अब तुम्हारी कौन सी फॉर्म है inequality की? तुम देख सकते हो ये greater than 0 वाली फॉर्म है. Greater than 0 is the first form. Can you see that? 1 चूज कर लो. 1 चूज किया. x स्क्वायर का कोएफिशिएंट तुम्हारा 1 है. तुम्हारा x स्क्वायर यहाँ पे c स्क्वायर है. c स्क्वायर इज द वेरिएबल. x की तरह जो वेरिएबल है वो c स्क्वायर है. कोएफिशिएंट इसका 1 है. c की पावर 1 है ही नहीं, 0 डाल दो. और जो तुम्हारे पास कांस्टेंट टर्म है वो -16 स्क्वायर है, तो वो मैंने -16 स्क्वायर करके एंटर कर दी और इक्वल टू का बटन दबा दिया. ये देखो आंसर आ गए ज़रा. लेकिन मार्क्स इस पे, क्योंकि कैलकुलेटर से सारी इनइक्वालिटीज हो जाती हैं, तो मार्क्स तो थोड़े से कटेंगे. अगर वर्किंग डायग्राम नहीं शो करोगे, ग्राफ नहीं बनाओगे, मार्क्स कटेंगे. क्योंकि एग्जामिनर को तो पता चल जाएगा कि यार इसने तो कहीं कैलकुलेटर से ही इस्तेमाल किया. एवरीबॉडी गॉट दिस? कि कैलकुलेटर से आप आंसर निकाल सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो. और हो सकता है किसी को पता ना चल रहा हो, तो वो ये कैलकुलेटर से आंसर निकाले, इसके हिसाब से डायग्राम बना दे. ये भी हो सकता है. You guys got this? Shall I move on now? Excuse me, sir, I have one question. पूछिए. Sir, how do you know कि C की value positive है या negative? And how do you determine between the sad face and the happy face? ठीक हो गया. Good, excellent questions. ईशा, हमारे पास जो पहले तो how do we determine कि C की वैल्यू पॉजिटिव है और या नेगेटिव है? C स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो पॉजिटिव 1 है. When nothing is written, then it means there's a positive 1 written. You got that? Oh, so we look at the coefficient, okay. Yes, you look at the coefficient, and the coefficient is telling us that it's a case. ठीक हो गया? Okay, sir, I get it. Yes, sir. Excellent. Excellent. अच्छा, 2 सेकेंड हम लोग ना मार्किंग स्कीम देखते हैं सेकेंड वाले की. उन्होंने मेथड मार्क दिया है तुम्हें इक्वेशन फॉर्मेशन बनाने का. मेथड मार्क c स्क्वायर -16 स्क्वायर तक 1 मार्क. फिर हर इनइक्वालिटी को सही तरह लिखने का 1 मार्क दिया है. यू गाइस गॉट दिस? आगे चलूं? Yes, ऑलराइट, sir. ऑलराइट. हर एक के लिए ये गुड है. मैं थोड़ा सा इसको let me see. I'm skipping over question number 2, and inshallah when we do differentiation I'll connect it with that. Let me choose a question for you guys now. Yeah, all right, let's do this. क्योंकि मैंने comment किया हुआ है. Dayan wasn't there, Mohammed Aziz wasn't there, Mayer wasn't there, Ibrahim wasn't there. तो देखते हैं. रमीशा को कल शायद याद ना हो. Guys, I want you to solve this.
Diane, is this a quadratic equation? I think so, yes, sir. Very nice. It's a somewhat quadratic equation. So you could say it's a hidden quadratic equation. So if equation ko Sir, is hum, that +6 part of the power or? no, it's like on a straight line, but it's because I extracted these pages from the papers, तो थोड़ा सा कभी ऊपर नीचे हो जाता. So +6 is okay. on the straight line, ठीक है? वो extraction में थोड़ी गड़बड़े हो जाती हैं. सर इसमें ये तो नहीं होगा कि x पावर 1/2 को a से इक्वल करके 4a स्क्वायर इक्वल -a इस तरह हो? Okay, you can do that. So Yes, sir. ये ठीक है, Ibrahim. That's one style. You want to do it that style? मुझे तो किसी ने बताया. Okay, fine. दो मेथड है तो तुम्हारा मेथड हम देख लेते हैं. 4x plus 6 is equal to 11x की power half. And what Ibrahim is suggesting is कि हम दोनों sides को square कर दें. That's his style. It's a style. I'm not saying कि अच्छा है बुरा है. आप लोग खुद decide करो whether it suits your method. 4x plus 6 का square 16x square plus 2ab. 2 4s are 8, 8 6 are 48x plus 6 square is 36. 16x square 121 इस तरफ लेकर गए हम माइनस कर लेते हैं भाई हमें तो नहीं याद. तुम लोग मेंटल मैथ करनी है तुम लोग कर लो. So 48 minus 121, 73. Negative 73x plus 36 is equal to 0. This is what we get. And I think, Ibrahim, you would want us to use the quadratic formula? जी सर. मिड टर्म ब्रेक थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. Midterm break तो बस अल्लाह माफी दे. So minus b plus minus b square minus 4ac over 2a. ये आपके पास आ गया. अब आप क्या करोगे? मैं तो ये नहीं करूंगा. मैं तो भाई सीधा सीधा कहूंगा भाई मैंने इतना बेवकूफ बना दिया एग्जामिनर को, तो मैं चला जाऊंगा सीधा कैलकुलेटर के फंक्शन पॉलिनोमियल सॉल्विंग डिग्री 2 क्वाड्रेटिक 16, फिर है जी -73. कोफिशिएंट डाल रहा हूँ. कोफिशिएंट्स आई एम प्लगिंग इन. ऑलराइट. ओह नाइस. Sir has the answer already. Good job. 36. And one is 4, the other is 9 by 16. So x is 4 and x is 9 by 16. Acha. Issue. Is there an issue with this method? Okay. So we do another method. ये अब इब्राहिम का method था. Dayan, I don't want you to learn this method ekdam se. What other method were you thinking of? Dayan, were you thinking of something else? Sir, we Let could use the x- equation you used above. I forgot about it. I forgot what it was. ठीक The है. 4. If you let the smaller power as a variable, can you do that? Can you let the smaller power x power half as a variable y? Then that would mean that x is equal to y squared. Agreed? If you square both sides, you get x equals y squared. So your equation, Ibrahim, you have to also see कि ये क्या चल रहा है. ठीक है?
4y squared minus 11y plus 6 is equal to 0. 4 6 are 24. 24 के factors 8 and 3. Taking 2y common, 2y minus 4 minus 3 common. I could have taken 4y common. 4y common, so that's y minus 2, 3 common, y minus 2, 4y minus 3, and y minus 2 equals 0. Y 4y minus 3 is 0. Y becomes 3 by 4, which is acceptable. X ka square root is 3 by 4. इसी तरह y minus 2 is 0. Y is equal to 2. X ka square root is equal to 2. In order to get the x value, all I need to do is to square this. अगर इनमें से कोई एक आंसर नेगेटिव आ रहा होता, you would have rejected that. इन दोनों में से अगर गाइस एक आंसर नेगेटिव आ रहा होता इस जगह पे अगर एक आंसर नेगेटिव आ रहा होता, you would have rejected that. I want you to remember this. We always reject a square root that is negative. Can you remember this? Yes, sir. It's important. Okay. All good. Everybody's good with this, मेरे ख्याल में, है ना? ये देखो इसके marks क्या हैं? Multiple methods हैं. Substitution is one, and then they've got the two answers. तो उसके marks हैं. Okay, so I'm skipping over a few questions here, and I am opening a latest paper. G. जो मेरा वाला मेथड था उसमें कोई मसला आप कह रहे थे हो सकता है? Yes. उसमें मसला ये हो सकता है कि उसके अंदर नेगेटिव स्क्वायर रूट पता ही नहीं लगेगा कि कब आया था इब्राहिम. तो मतलब वो आंसर हमेशा तुम्हें जो है ऐसे दे रहा है, क्योंकि x का स्क्वायर रूट अगर नेगेटिव आ रहा था तो वो ये तो x की जवाब दे रहा है, मतलब उसको स्क्वायर करके बता रहा है ना, तो वो पता ही नहीं लगने देगा तुम्हें कि आंसर जो है वो नेगेटिव आया था कि नहीं. इसका you get this या नहीं? जी ठीक है, समझ आया. इसका एग्जाम्पल हमने कल किया था, थिंक पता नहीं कहाँ किया था. थिंक सारा के क्वेश्चंस में किया था यहाँ पे कहीं. We did this yesterday. मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है किस जगह पे था, किया था हमने. ये जगह. अच्छा, इसके अंदर हमने रिजेक्ट किया था ये देखो इब्राहिम, ये क्वेश्चन था 6x प्लस स्क्वायर रूट x माइनस 1 इक्वल 0. इसमें हमने ये वाला नेगेटिव हाफ रिजेक्ट किया. एक ही आंसर है इसका 1/9. और अगर तुम्हारे मेथड था तो उसमें ये दोनों आंसर आ जाते हैं x के. दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. अच्छा जी गाइस, अब एक काम करते हैं, जरा कोई मुश्किल पास पेपर निकालते हैं तो सभी आसान निकल रहा है. I express the equation of the curve this and hence state the coordinates of the vertex of the curve. Done. This is better. All right guys, let's try this. I think ये भी तुम लोगों से हो जाएगा. पार्ट बी के की जगह 2 डाल दोगे तुम लोग, और
और तुम्हारे पास या ऑलराइट पार्ट बी कर दो भाई प्लीज. How do I make this more visible to you? Don't know. Okay guys, ये क्वेश्चन है तुम्हारा 2x squared plus kx plus k minus 1 is the equation of the curve. इसमें वो कहता है it is now given that k is 2. मतलब k की जगह तुम 2 लगा दो. Y is equal to 2x squared plus 2x plus 2 minus 1. This becomes y is equal to 2x squared plus 2x plus 1. वो कह रहा है कि इसको इस कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में बताओ और फिर उसके बाद वर्टेक्स बता दो. जरा जल्दी से करके जवाब दे दो मुझे 3 मार्क्स के लिए. Dan, do you remember completing square? Somewhat, sir. ठीक है. Completing Sir, square can के you लिए give us the other formula that you told us? What other formula? मैंने तुम्हें Sir, negative minus b by 2. minus b over 2 है. ठीक है. तुम उससे तुम वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स तो तुम्हारे निकल आएंगे लेकिन और b भी निकल आएगा लेकिन तुम a में कंफ्यूज हो जाओगी. Okay, sir, ठीक है. अब देखो ना ये अब ज़ारा तुम बात अब ये कि जब तक ये ना इतनी सारी चीजें हम ना कर लेना तब तक हमें नहीं पता लगता कौन सी चीज किधर लगनी है और किधर नहीं लगनी. मतलब ये तो अब एक्सपीरियंस पूरा का करना पड़ेगा जी. सर इसका आंसर -1/2 और 1/2 आएगा -1/2. फॉर द वर्टेक्स. All right, good job. और 1/2 बोल रही हो? सही कह रही हो. 100%. तुमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से किया या कोई और स्टाइल किया? सर पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर से किया. यस. Very nice. Okay, guys. Sir, तुम could लोग you go सुनो. over completing square once? जी Dayan, I'll just show you the completing square. Dayan, आप ना देखते हो कि what do they need? उनकी नीड के बेस के ऊपर आप डिसाइड करते हो आपका पहला स्टेप क्या होगा. Dayan, आपने नोट किया कि इनके पास जो होल स्क्वायर फॉर्म है ना उसमें 2 बाहर है. तो आप Dayan क्या करते हो कि 2 को कॉमन ले लेते हो. x स्क्वायर्ड प्लस x बना देते हो. इट्स यूजुअली अ गुड थिंग. अब ज़ारा ये करती नहीं है लेकिन ये गुड थिंग है कि हम जो कांस्टेंट है ना इसको लीव अलोन करो. लीव मी अलोन है ये कांस्टेंट. ठीक है. इसको छेड़ो मत. ठीक है. यू गॉट दिस दायान. फिर आप x को स्क्वायर लिखोगे प्लस 2 इंटू एक्स. ये फॉर्मेट है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्मेट बना रहे हो. a स्क्वायर प्लस 2a. इस x को बेसिकली 2ab बना रहे हो. तो इस x जिसके साथ बेसिकली 1 है आपने इसको चेंज नहीं करना. मतलब आपने जब 2 कॉमन लिया है इस 1 में से तो आपने इस 1 को 2 से डिवाइड किया है. Whenever you take something common, you divide. मतलब अगर मैं 16 से 2 कॉमन लूं तो मैंने 16 को 2 से डिवाइड करके 8 लिख दिया. इसी तरह 1 से मैं अगर 2 कॉमन लूं तो मैं उसको हाफ लिख दूंगा. अब मेरे पास हाफ आ गया. हाफ के स्क्वायर को मैं ऐड कर दूंगा. राइट. बट दैट्स माय ओन इंट्रोडक्शन.
which is why I take that away. So in order not to change the original question, but I am still changing the way it looks. Cancel मैंने 1/2 whole square और -1/2 whole square को cancel नहीं करना. Cancel हो जाते हैं इसलिए मैंने introduce किया. ये जो मैंने blue में highlight किया है ये सारा का सारा a plus b whole square की तरह है. So it will just pack itself in a plus b whole square format. 2 इधर चला जाएगा. ये -1/4 हमेशा ये b square minus जो है ना ये बेचारा बाहर रह जाता है. Times 1. 2 फिर मल्टीप्लाई होता है अंदर. x plus half का स्क्वायर -1/4 को 2 से मल्टीप्लाई किया -1/2 plus 1 and then we further simplify this 2 bracket x plus half whole square -half plus 1 जो होता है वो positive half बन जाता है. This is what you get. तो इसको ये फाइंड कर लिया था ईशा ने यहां तक निकाल लिया था. ऐसे ही किया था ना तुमने. और फिर ईशा ने क्या किया उसने वर्टेक्स निकालने के लिए एक मेथड यूज किया. वो मेथड ये था she saw the inner bracket and she equated the inner bracket 0. That gave her the x coordinate of the vertex and whatever was on the outside was her y coordinate of the vertex. You got this? Yes, sir. ज़ारा आपसे तो हो गया है बिल्कुल. ईशा से भी हो गया. मायर आपसे हुआ है. मोहम्मद अजीज सर अभी कर रहा हूँ ये मतलब अभी समझ आ गया. ठीक है. रमीशा आप बताओ. हो गया सर. ओके. मोहम्मद अजीज ऑल गुड. Yes, sir. ऑल गुड. ओके ठीक है. मतलब क्लियरली गुड. मतलब देयर इज नो पॉइंट इन आस्किंग है ना. वो वाला गुड है ना ये. Eight marks. My God. Let's do this, guys. 8 marks. This is the last question of the day. We would want to do this. It's 8 marks. Differentiation के बगैर. थोड़ा सा differentiation required होगा guys. Differentiation के बगैर नहीं हो सकता. So I'll have to let this side because इसको differentiation later on आप learn करोगे. इसमें differentiate करना है. लेकिन alternate method में हम differentiation है तो we can try it again. ठीक है. Let's try it. Gut feeling थी मेरी कि differentiation के बगैर मुश्किल हो जाएगा. मुश्किल तो होगा but we can do it. All right guys, let's try this. Curve C1 has the equation. The curve C2 has another equation. K is a constant. The tangent to C1 at the point where x is 3. Tangent to C1 at the point where x is 3. So guys, we got to see x step 3 hai, and you plug in x key value 3 into the curve. Can you do that? So that's 9 minus 12 plus 7. Is that 4?
9 plus 7, 16. 16 minus 12 is 4. So that's a point. 3, 4 is a point. They say the tangent to C1 at this point is also tangent to C2 at point P. Tangent to C2. So what that means is C1 पे जो tangent है वो is also tangent to C2 at point P. Find the value of K and the coordinates of P. सर डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा ताकि हम ग्रेडियंट निकाल लें फिर टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करके Yes, differentiation use करना पड़ेगा. Differentiation के बगैर जो है differentiation Will के we बगैर. differentiate C1? Yeah, you're right. Guys, let's not talk differentiation. थोड़ी मेरी गलती होगी, मुझे ये दिन तुम लोगों को देना नहीं चाहिए था. अभी differentiation हमने की कोई नहीं है, हम differentiation पे कैसे चले जाएं? कर्व, लाइन, टेंजेंट, ये भी आसान है, ये भी आसान है. मुझे तो लग रहा है सभी आसान है. एक सेकेंड. और क्या मुश्किल? टेंजेंट है लेकिन डिफरेंशिएशन नहीं. चलो, दैट्स गुड. ऑलराइट गाइस, 7 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन है. पहला पार्ट तो आई थिंक तुम लोग थोड़ा सा तंग हो गए. या फाइनली कोई तंग करने वाला, थोड़ा सा कोई गलती इधर हो सकती है. ऑलराइट गाइस, वी वांट टू ट्राई दिस. ट्राई इट प्लीज. तुम लोगों की गलती हो सकती है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया. देयर इज अ ट्रैप तो नहीं है. जनरली पीपल मेक अ मिस्टेक हियर. करो ये क्वेश्चन प्लीज. अटेम्प्ट इट. Gee guys, are we Dayan, are you getting this? Hey Dayan? Sir, I'm waiting for you to solve it. Okay. देखो, कहता है find the set of values of k for which the line and the curve meet at two distinct points. Whenever they talk about meeting, you got to think one thing, okay? You got to think simultaneous equation, okay? Can you remember this now? Meet means, and two distinct points means simultaneous equation plus probably discriminant. ठीक है? जी sir. And b square minus 4ac is greater than 0 is what you need to solve for, because they say two distinct points. ठीक है? अब बात है सेटअप की. x square, ये 3kx उधर चला गया तो ये -4kx हो गया.
2 इधर है तो ये 2k उधर चला गया प्लस 2k हो गया इज इक्वल टू 0. ऑलराइट, अब मैं बाकियों से पूछूंगा. ऑलराइट, कैन वी हैव ईशा ईशा मुझे बताओ, a तो 1 हो गया, b क्या, b और c बता दो. Sir, I wrote B as K minus 3K. k minus 3 माइनस k minus 3k लिखती ना. k माइनस तुमने लिखा k minus 3k, तुम लिखती माइनस k minus 3k नहीं. Okay, sir. क्यों? अच्छा मुझे समझ आ गई, तुमने थोड़ी सी, अच्छा तुमने क्या किया, तुमने x स्क्वायर को तुम लेफ्ट पे लेके गई हो या राइट पे लेकर आई हो? राइट ज़ारा? Get it. I should get minus K minus 3K. हाँ, माइनस के माइनस 3k को तुम्हें माइनस 4k लिखना है. ओके, दैट विल मेक लाइफ मिजरेबल अगर नहीं लिखोगी. सी का बताओ क्या लिखोगी? Sir, I wrote 2 minus 2K, but I think I did it differently. So signs का मसला हो सकता है. 2 plus 2k. 2 plus 2k. अच्छा, तो usually people get sometimes don't write the 2k with this usually. तो b square वो वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, b square minus 4ac greater than 0. b square is minus 4k का square. 4a is 1, c is 2 plus 2k. ज़ारा तुमने स्केच करके किया या वो एक कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लिया? सर स्केच करके कैलकुलेटर टी लगाया. वेरी गुड. कैलकुलेटर से तुम ना जरा कंफर्म जरूर कर लिया करो. ठीक है सर. शाबाश. अगर हम 8 से डिवाइड कर दें तो ये हो गया 2k स्क्वायर माइनस k माइनस 1 ग्रेटर देन 0. और जिस तरह ज़ारा ने किया कि उसने इसके रूट निकाले, उसने उसको फैक्टराइज किया और रूट निकाले या कैलकुलेटर यूज करके रूट निकाल लिए. डिपेंड करता है आप लोगों के कंफर्ट लेवल पे. और हमारे पास 2 रूट्स आ गए. इब्राहिम, आई होप तुम्हारे लिए आज की क्लास बहुत ही इजी थी. k equals 1. 2 आंसर्स आ गए. मायर कर रहे हो? जी सर, ये आंसर निकाल. डन. और ये आंसर निकाले और ये स्केच किया और देखा कि इसने पूछा क्या है. इसने पूछा है व्हेन इज द एक्सप्रेशन y ग्रेटर देन 0. It is greater than 0 to the right of 1 and to the left of minus half. ठीक है ना? ऐसा ही है. दयान, आपको समझ आ गई है ये वाली बातें? जी सर, अब आ गया. ठीक हो गया. x is greater than 1 और x is less than negative half. तो ये तुम्हारे पास कॉम्बो में ब्यूटीफुल सा आंसर आ गया. थिंग्स आर ने ये बोला था k is greater than 1, k is less than negative half. k, सॉरी ज़ारा, ये तुम सही थी, मैंने गलती की. k, x नहीं k. x दिमाग पे बैठा होता है. k के बारे में बात हो रही थी. ट्रीट द k like x. Okay, everybody got this? जी सर. Yes. All right. Right. So ये जो ensuing part है, the follow-up part, we can do that later. Diane, I will stop the recording